everyone, welcome back to the Third Man Cricket Show with my guy Ankit in the house. Well, start करने से पहले just do the needful guys. अगर कोई अभी live देख रहा है, so like the video, subscribe to the channel, hit the bell icon. जो बाद में repeat पे देखने वाला है, do the needful as well. Just a small contribution from your end is all that we ask, and there is quite a few things to discuss, Ankit, if I'm not wrong, आज की stream में. I mean, not major ones, I would say, but I think some exciting things which we'll be discussing. जैसे कि आपने title में देख लिया होगा, we're discussing a hot topic right now, and we're discussing the England versus New Zealand first ODI जो अभी चल रहा है, and one game which happened yesterday between Australia and South Africa. Before that, Ankit, how Yeah, are you? all good यार. I mean, कल वर्क फ्रॉम होम है, उसकी खुशी अलग होती है बिकॉज पूरा वीक हो गया एंड एक्शन पैक्ड है. आई थिंक सैटरडे कल श्रीलंका बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान, उसकी भी बात करनी है हमें. आज इंग्लैंड न्यूजीलैंड है एंड देन कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका था. सो क्रिकेट पैक्ड काइंड ऑफ वीकेंड रहने वाला है आई थिंक फैंस के लिए. एंड आज आई थिंक टिकट्स भी ओपन हो गए थे आई थिंक इंडिया के जो जनरल सेल है. सो बहुत सारा अच्छा डे आई थिंक, गुड डे फॉर द क्रिकेटिंग फैंस. सो या आई मीन लॉट्स टू स्टोर इन आई थिंक. सो लेट्स गो. यार, और तूने बात करी टिकट्स आगे, दोबारा तुझे मिली टिकट? कोई जा रहा है कोई मैच देखने तू? नहीं, आई एम नॉट गोइंग. आई मीन इंटर्नशिप है मेरा एंड वहाँ पे ही ट्रैवलिंग बहुत है इन्वॉल्व. सो अनफॉर्चुनेट, बट या आई मीन बाद में कभी देयर विल बी चांसेस, होपफुली नेक्स्ट टाइम. फेयर इनफ, फेयर इनफ. एंड संजू सैमसन इज हियर. संजू सैमसन, जिनको वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिनको आई थिंक काफी फ्री टाइम है अभी संजू के पास. सो ही इज, थैंक यू संजू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम एज ऑलवेज. एंड इंग्लैंड विनिंग दिस वर्ल्ड कप अगेन इज व्हाट ही इज सेइंग. यस, दे आर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स, आई वुड से, बट आज के मैच में जो चल रहा है उसमें तो लग नहीं रहा दे आर फेवरेट्स टू विन द गेम येट, बिकॉज न्यूजीलैंड आर ऑन कोर्स टू विन द गेम. बट we'll talk about that later, but let's discuss the hottest topic right now, which is the reserve day. India versus Pakistan, sorry, have a reserve day, unlike other games, which is कोई भी बाकी teams. I mean, it's very very hard on the other teams, Ankit, if I'm not wrong. I mean, तेरा opinion में जानूंगा, but Yeah. is this just for they just value India Pakistan games over the Asia Cup right now? यार आई मीन दिस इज जस्ट अनफेयर लाइक टोटली. और फिर उससे अच्छा सभी टीम के लिए हो सकता था ये, बिकॉज कल श्रीलंका बांग्लादेश है. आई थिंक वो भी एक इंटरेस्टिंग होता. लाइक अभी नो आई एम थिंकिंग लाइक कि इवन अज्यूमिंग द फैक्ट कि रिजर्व डे होता एंड लेट्स अज्यूम कि कल बारिश हो जाती, श्रीलंका बांग्लादेश के लिए रिजर्व डे होता. अब आप उस दिन मैच खेलोगे जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट द सेम वेन्यू फॉर इन कोलंबो फॉर ऑल द मैचेस दैट इज हैपनिंग आई गेस. सो वो भी एक मैनेज करना. सो आई थिंक अभी ना जस्ट लाइक ओवरऑल अगर हम आउटलुक देखें, आई थिंक द वे एशिया कप हैज बीन होस्टेड एज ऑफ नाउ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में 4-5 मैचेस देन 10-12 आर गोइंग टू बी प्लेड इन श्रीलंका. उसमें से आधे तो हो गए, थोड़े बाकी है. बट यू लुक एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि इट लुक्स अनऑर्गेनाइज्ड फॉर सो मेनी रीजंस. लाइक हो सकता था फिर वो लास्ट मोमेंट पे ऑब्वियसली स्विच हुआ, बट इससे बेहतर हो सकता था. लाइक ऑर्गेनाइज्ड एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल से हम उम्मीद बेहतर करते हैं. लाइक बीसीसीआई है, उसमें पीसीबी है, बहुत सारे बोर्ड्स है. बट अभी नो लाइक आपके क्या थॉट्स है? मेरे हिसाब से बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. आई डोंट नो हाउ इट विल फिनिश, बट अभी तक जितना हुआ है इट हैज लुक्ड अनप्रोफेशनल. एंड इसलिए जो हॉट टॉपिक आपने मेंशन किया कि रिजर्व डे इंडिया पाकिस्तान के लिए रखा गया, देन दैट इज टोटली अनफेयर. लाइक फिर यार आई मीन बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलती है दोनों टीम, सो ऑब्वियसली वैल्यू है उस मैचेस की, बट दैट डजंट गिव यू द राइट टू बी अनफेयर विद अदर टीम्स. What do you feel like? Right. Yeah, I mean, मेरे हिसाब से the organization hasn't been good as well, क्योंकि I think India ने 2 मैच खेले और हमने सबसे कम क्रिकेट खेला है. If you see, Yeah. I mean, yes, Bangladesh have played full games. I think they played against Afghanistan, they played against Pakistan as well. Pakistan played against किसके सामने खेले थे? They played against Bangladesh. I think they played against Nepal as well. I think Sri Lanka played against Bangladesh and Afghanistan as well. So I think India is the only team who have played the least number of games so far, or like the least they have spent the least time in the middle. But yeah, I think it is totally unfair what has happened. And when all of this is coming into picture कि यार बारिश आने वाली है श्रीलंका में, it's not like weather आपको अचानक से पता चलता है. You can predict, you can have a look at the forecast at least a couple of weeks, maybe like 3 weeks back, or 3 weeks is more than enough to organize or move the competition to a new place. हम सबको पता है India is not going to play an ODI in Pakistan. The best option is to play the entire tournament in the UAE. I don't know why
UAE wasn't Yeah. considered because I think they organized the UAE leg last time around was a good one मेरे हिसाब से तो I think the one UAE with league, I think it was, I think जो president है, I think Asian cricket के जय शाही, I think he himself mentioned like it was because of the weather या फिर जो atmosphere इस महीने में September में भी because and one day cricket anyways ऐसा होता है कि the conditions are difficult, so that was one of the reasons. But like अभी no one more thing, like I was thinking like although बारिश रही है like in Colombo, एक आध जो इंडिया पाकिस्तान का गेम, इंडिया नेपाल का गेम, बट व्हाट डू यू फील लाइक द टाइमिंग ऑफ द एशिया कप एज वेल? लाइक मैं वनडे क्रिकेट देखता हूँ हर जगह, कुछ जगह टाइमिंग जो होते हैं वो प्रेफर्ड होते हैं 12-1 बजे का, लेकिन 3 PM नाउ दैट इज अ सीरियस टाइमिंग बिकॉज 3 PM लाइक भले आप किधर भी हो, टाइम मैच नहीं हो रहा हो, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ स्टार्ट फॉर एनी वनडे मैच, लाइक फिर वेदर किसी भी तरीके का हो, लाइक आई प्रेफर 12-12:30 1 मैक्स, लाइक दिस आर गुड टाइमिंग्स, फिर 9-10 तक आपको फर्क नहीं पड़ता अंकित थ्री मेरे पी एम हिसाब से I स्टार्ट। don't think या No, no, I don't think that is the issue here. I think बारिश आई तो पूरे दिन भर आई है. So या अगर हम सुबह में स्टार्ट करते थे, I think half of the game would have washed out. बट नो लाइक Even इन जनरल, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की रेन, बारिश तो ठीक है, no, लाइक no, अभी that आई is है इस बार, completely up बट to them. लेकिन जनरल 3 PM स्टार्ट, लाइक यार आई मीन धूप नहीं में नहीं, आप that स्टार्ट is कर रहे हो completely मैच, up to लाइक them. I think 3 p.m. only is for like India. And I think अगर श्रीलंका में वो time around I think 2 बजे. I think half या 1 घंटे कुछ तो difference है. So that eventually doesn't matter because in India we start ODIs at 1:30 as well. So या I think half an hour या 1 घंटे का difference से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. But the only point was if rain was predicted and the rain was going to play a big part. Backup के लिए you should have a backup venue as well. I just feel ये जो या reserve day का जो system है, I think there should be a thing called maybe like something introduced which is a backup venue क्योंकि if you are playing in the subcontinent it's very easy to organize any tournament in the UAE मेरे हिसाब से I think all the boards या agree I think UAE के conditions are pretty much similar to where they play in their home conditions as या well. I think it all comes down to the revenue and stuff like या that कि अभी श्रीलंका में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है. Even if अगर बांग्लादेश में भी होता I think we would have seen better and bigger crowds as well या for any game. So I just feel श्रीलंका को उनको करवाना था श्रीलंका में श्रीलंका was the option for most of the boards and including the BCCI. So and या Pakistan did not want to shift the games to Hambantota for some reason as well. So I think all in all बहुत ही खराब organization रहा है till now. Hopefully the Super 4 stage allows us to see good quality cricket या and complete games, full games. क्योंकि अगर नहीं होते then there was no use of playing या cricket in like for like 3 weeks 4 weeks whatever जो हम या ट्रैवल कर रहे हैं श्रीलंका के लिए हमने एंड देखा था इसमें तो आई हमने खाली थिंक प्रैक्टिस की है. या आई थिंक इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है अभी ना, लाइक वी हैव लाइक जो हमारा मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आई थिंक जो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उसमें भी रिजर्व डे था, एंड इवन द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, आई वोंट से रिजर्व डे था बट ब्रेक्स में खेला गया था, लाइक फॉर 7-8 ओवर्स हुए, उसके बाद रेन आई, रेन इंटरप्शन, अगेन पाकिस्तान केम टू बॉल. सो एंड हमने जितने टाइम से क्रिकेट देखा है, वी नो वन थिंग दैट इज मोमेंटम इन द क्रिकेट. लाइक एक बार जो मोमेंटम, कोई टीम अच्छी ट्रैक पे हो तो टूट भी जाता है, कोई टीम अगर बुरी भी हो तो उनको मिल भी जाता है जब, एंड रिजर्व डे कैन बी द काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड वाला गेम मुझे बहुत अच्छे से याद है, लाइक वी वर इन अ वेरी गुड पोजीशन व्हाइल बॉलिंग एंड द नेक्स्ट डे न्यूजीलैंड केम 70-80 ऑड रन ऐड किए, बॉलिंग तो फिर अलग ही उनकी रही उस मैच में, बट momentum is a big thing that comes into place when we talk about reserve day. So you feel like कि reserve day के भी उतने ही circumstances भी है, जितने हम तारीफ करते कि पूरा मैच तो होएगा, बट द टीम हु मे बी ऑन टॉप बिफोर रेन इंटरप्शन, आई थिंक दे मे बी द वंस थिंकिंग लाइक यार अब ये मैच फंस जाएगा, सामने वाली टीम को ब्रेक मिलेगा, जैसे वो हुआ था आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का जो गेम था, शाहीन अफरीदी का स्पेल, हमें वो लगा कि शायद इन दैट ब्रेक उन्होंने कुछ वो फाइंड कर दिया, अपना लेंथ बेहतर कर दिया. सो यू फील लाइक कि ये एक चीज है रिजर्व डेज के साथ. No, I don't think that's a big factor क्योंकि रिजर्व डे हमारे साथ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में भी था. I think I would say the first day we dominated and second day हमारे पास गेम होता. I think we pretty much started the second day from 0 for 0. I think it can go both ways. I think एक टीम जो टॉप पर है वो एक ब्रेक के या बाद अगले दिन शायद डोमिनेट ना करे एंड जो टीम dominate nahi kari hai first day pe, maybe the reserve day helps them to come back या with a good strategy and make an even contest. So I think itna zyada impact mere hisab se to nahi hai for the reserve day, but the only good thing is we kind of get a final result for the game. So I think which is more important. I think it will be interesting to see. I think World Cup ke around there are not
games which will be washed out or something. I think हमें Hmm. World Cup तो अच्छे खासा मिलेगा because the start of the cricketing season in India. Yeah. But yeah, I think I would preferred because Asia Cup is a big tournament for before any World Cup. I think you play a lot of teams who you are going to play in the World Cup as well. Yeah. I think you play Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. So out of the other Hmm. eight, other Yeah. 9 teams, you're playing 4 of them already before the Hmm. World Cup. So that is a Yeah. big plus. But unfortunately, the rain isn't allowing us to do that. So which is Hmm. not good in my opinion. So mere hisab se this Yeah. should have been a backup venue, and UAE is Hmm. probably the safest place to play cricket. Hmm. And right now, I don't think money and all shouldn't have been like. Of course, the boards Hmm. will look from that point of view, but in the end, you want the teams to be ready for the World Cup, which unfortunately अब तक लग नहीं रहा because of this Asia Cup. But थोड़े Yeah. comments लेते हैं if there are any. Yes. Yes. Akshat is saying if Bangladesh lose tomorrow, then they'll be out of the Asia Cup. Yes, Sri Lanka play Bangladesh tomorrow Yeah. on a sunny day, if I'm not wrong, and Hmm. without a reserve day, if I'm not wrong. So I Yes. think I think they wanted not much focus is going to be given on that game, but yeah, I think the final Hmm. focus is the game on the Yeah. on Sunday, India and Pakistan. जिसमें बारिश Hmm. तो आने वाली है सबको पता है. Anyways, let's move on to the other topics. अंकित हमने और क्या डिस्कस करने का सोचा था हमने Yes. डिस्कस करने का. Let's see. Let me check हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं. Australia, South Africa, I think yesterday's game. Yeah, maybe we can do that. Hmm. South Africa versus Australia. Hmm. Once again, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें. So Hmm. these are the Yeah. umpires for the ODI World Cup this year. There are 9 to 10 umpires or something. Find the Hmm. odd man out इसमें अंकित, and everyone in the chat जो भी अभी देख रहा है बाद में देख रहा है, please find the Yeah. odd man out for me. I think it's not the odd man out. I think it's the common man out. I think because बहुत टाइम से लाइक हर आईसीसी इवेंट में वी फाइंड दिस नेम एंड इंडियंस के लिए थोड़ा वो रिलेटेबल रहा है फॉर सर्टेन रीजंस बट आई मीन या आई मीन अब जो है वो है अब वी कांट चेंज इट हमें अपना परफॉर्मेंस हो सकता है वी हैव टू जिंक्स दिस वन आउट कि उनके उपलब्धि में हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा हमें वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा जस्ट टू ब्रेक दैट जिंक्स आउट बट या आई मीन एक्सपीरियंस है आई थिंक अंपायर्स में तो फर्स्ट 6-7 नेम्स आई कैन सी जो हम सब जानते हैं बाकी तो आई थिंक 2-3 न्यू एडिशंस भी लग रहे हैं लाइक द लाइक्स ऑफ आसन राजा एंड ऑल आई थिंक बट या ओवरऑल तो टाइम टू ब्रेक द जिंक्स या फर्स्ट वाला तो मैं नाम लेना चाहता नहीं हूँ ओनली बिकॉज अपनी इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है वो प्लेयर के वो अंपायर के साथ बट एनीवेज let's look on to the other topics which we have so before getting into the South Africa game Ankit KL Rahul has landed in Sri Lanka if I'm not wrong he's training with the team net session का indoor net session करा reports were coming out that he played really well I think but या nets में तो I think हमारे अच्छे batting करते हैं हमारे and if he's fit does he come into your 11 straight away? Because if KL Rahul is your first choice player as a wicket keeper, then he should play. But if he या is still a second choice or maybe like a backup option could be considered, who starts for India in the Super Fours at number like as a wicket keeper? I would say. I'm thinking like, do we have the luxury of playing with five bowlers? But the answer is no. लाइक बिकॉज द थिंग इज कि हार्दिक ने भी रन बनाया जड्डू की तो आई थिंक बॉलिंग भी क्रूशल रहेगी दो ही स्पिनर है बिकॉज लाइक इट्स रियली वेरी टफ लाइक कि टॉप थ्री को तो आप आप देखोगे भी नहीं दे आर लाइक द कंफर्म स्पॉट्स फॉर यू फिर 4 5 6 पे आ जाता है 6 भी नहीं बिकॉज एन हार्दिक पांड्या एट नंबर 6 उन्होंने भी रन बनाए थे उनकी बॉलिंग भी क्रूशल होगी सो बच जाते हैं दो स्पॉट टफ वन यार लाइक ईशान किशन राहुल श्रेयस अय्यर सी द वन थिंग इज कि ईशान किशन ने जब दोहरा शतक मारा था आई रिमेम्बर उसके नेक्स्ट गेम में द मैनेजमेंट बैक्ड शुभमन गिल सो दिस इज नॉट अबाउट शुभमन गिल या फिर ईशान किशन इसका मतलब आपकी थियोरी वो है कि जिनको आपने बैक किया था पहले यू वांट टू बैक देम हमने देखा था कि आई थिंक अब द डबल सेंचुरी के बाद ईशान किशन ने नहीं खेला था गेम रोहित एंड गिल ने ही ओपन करी थी सो इफ दैट काइंड ऑफ इफ वी अप्लाई दैट थियोरी आई सी के राहुल कमिंग इन बिकॉज देन आपने उस टाइम भी वो उस टाइम तो दोहरा शतक मारा था यार आई मीन फिर तो हक भी नहीं था आपका उनके उनकी तरफ देखने का बट स्टिल आपने निकाला था आपने बैक किए थे अपने प्लेयर्स को सो उस लिहाज से मे बी के राहुल बट देन अगर फॉर्म वाइज देखना आपको तो देन आई विल प्रीफर के राहुल एंड ईशान किशन बोथ बट आई डोंट सी बिकॉज उतना टाइम नहीं है कि के राहुल को आप बाहर बिठाओ यार फिर बिकॉज देन he's got less chances like पाकिस्तान वाला मैच वी डोंट नो कि क्या इंडिया की बैटिंग आएगी बिकॉज ऑफ रेन इंटरप्शन एंड ऑल उस लिहाज से फॉर मी के राहुल या फिर के राहुल एंड ईशान किशन
आई थिंक डील करवा लो कि यार पाकिस्तान ने पहले मैच में पहले बॉलिंग करी थी, अब हम करते हैं, एंड वील चेज दिस टाइम अराउंड, कि एटलीस्ट पहले दिन के बाद दोनों टीम को एक एक चीज करने मिल जाएगी आफ्टर 2 games. But yeah, jokes apart, I think for me, Ishan Kishan has to. I would still not play KL Rahul in my opinion, because of the kind of form he is in. You cannot drop Ishan Kishan at this moment. I think Yeah. it will be very very Hmm. cruel on him, because he has done everything to Hmm. cement a place so far based on his form to be Hmm. in the 11. I think four 350s against Pakistan. Then I Yeah. think he scored against 350s against West Indies. Then he scored against Pakistan as well, a brilliant 80. So I think there are no reasons to drop Ishan Kishan at this moment. KL Rahul, yes, he's coming back, but doesn't mean that the player who has scored crucial runs Hmm. उसकी जगह बाहर हो जाए team से. I think he also adding that left-hander wala I think factor. I think he has done nothing wrong to Hmm. get out of the 11. So yeah, मेरे हिसाब से it has to be Ishan Kishan and not KL Rahul. But anyways, let's move on to the next topic, which is a good game. यार बहुत अच्छा game हुआ, to be honest. And Temba Bavuma, first of all, brilliant 100. He carried the bat, became only the 13th player in Hmm. ODI cricket, if I'm not wrong, to carry his bat Hmm. in ODI cricket. So brilliant 100, Hmm. 114 not out out of Yeah. 220, And I 222. think the one thing with Temba Bavuma is कि South African conditions में now this is where because अगर उनका जो खास करके उनकी जो हाइट है ना उस लिहाज से मोस्टली जो है साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में बैक ऑफ द लेंथ या फिर हार्ड लेंथ की तरफ बॉलिंग होती है या फिर बाउंसर्स भी कह लो आप एंड इन दैट कंडीशन उनकी जो हाइट है एंड इवन जो बॉलर्स है ऑस्ट्रेलिया के या फिर इट्स नॉट इजी टू टैकल इन दैट कंडीशंस बट आई थिंक द वे ही बैटेड बिकॉज आई थिंक जो लॉन्ग फॉर्मेट नहीं है आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कि टेस्ट में उन्होंने अच्छा किया बट वनडेज एंड T20s में बहुत बार उनके ऊपर सवाल उनके पोजीशन के ऊपर सवाल उठे हैं सो आई थिंक दिस वाज गुड टू प्रूव एंड गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप लाइक फॉर्म हो तो लाइक कैप्टन के पास फॉर्म हो तो दैट इज नाइस आई थिंक ओवरऑल तो टीम बैलेंस है साउथ अफ्रीका की सो वेल डन टेम्बा लेकिन सामने वाले आई थिंक मानुस Labuschagne like he has an our different relation with concussion शब्द आई वोंट बी सरप्राइज कि T20 फॉर्मेट में भी कंकजन सब आ जाएंगे कभी किसी एंड वहां पे भी अपना कद बढ़ाएंगे बट या आई मीन वेल प्लेड मानस लाइक अलग था यार कल का मैच लाइक बट फॉर मानस लाइक मे बी रिडेम्पशन या फिर पोटेंशियल चांस इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड Yeah, fair व्हाट डू यू enough. फील Yeah. I think Rahul is saying it's always a historical moment whenever Labuschagne comes in as a substitute, concussion substitute to be precise. Yeah, I think he came in at number 8. जो कि I think he also gave an interview saying he told his mom that he won't be playing in the 11. He saw the team already, but his mom said कि यार नहीं आप खेलोगे आज के दिन. I don't know how that worked out, and it lucked या out for Marnus, but yeah, he was dropped from the World Cup squad, dropped for the first ODI, came in as a replacement, not a part of the 11, came in as a concussion substitute once again, and what he does, and he scored runs really quickly. या I think he reached his 50 of like 45 balls or something when the match देखा था when he started hitting. So I started watching the game from 122 for 7. And उसके बाद से brilliant, I think, contribution from Ashton Agar as well. या I think he's one of the most underrated cricketers in world cricket is या Ashton Agar. I think he does his job really well. He is a good bat. I wouldn't say I think he is a bowling all rounder, but his batting या is equally good as well. So I think Sanju Samson, yeah, Ashton Agar is a good asset to have as a for any team, to be honest. But yeah, talking about his innings, कितने बनाए 83 बनाए कितने बनाए थे 83 या Labuschagne ने? 80 Yeah, 83 83 not. Yeah, so and that too really quick on a या against a good bowling side, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया weren't स्कोरिंग रेट उनका कम नहीं था. उनका स्कोरिंग रेट हमेशा 5 के ऊपर या 5 के आसपास ही था, मे बी at 6 at times, and they were trying to finish the game really quick. So या commendable effort by Australia, and this is the reason you do not count Australia out of any situation. I mean 113 for 7, उसके बाद to put on a 122 run stand, that too for the I think 8th wicket or 9th wicket, जो भी 8th wicket. I think that's a big effort. I think या we won't see these kind of partnerships and innings taking place anytime soon, in my opinion, because या MS Dhoni was known to do something like this, and he did it quite often. And apart from that, I don't think we have seen these kind of games and situations happen, international cricket में regularly. So I just feel या it's one of the innings which we will remember for a very long time. And I really, and he has a point to prove as well. It's not just Labuschagne. I mean, आज के मैच में भी हम देखेंगे Harry Brook is not in the World Cup squad right now as well. So
I think even he will try to use the other three ODIs to score runs and maybe make a case कि यार मेरे को ले लो England team में. But Labuschagne, I don't Hmm. know. Maybe I still don't see him in the Yeah. World Cup squad only because उनका patch काफी खराब रहा है in ODI cricket and he kind of उन्होंने आगे बोला भी था कि यार मेरा पैच बहुत खराब रहा है in ODI cricket and I Hmm. understand the decision made by the selectors. So yeah, but in the Hmm. end, brilliant innings and I think we will remember this Yes. long time. Yes, I think वर्ल्ड कप में थोड़ा मुश्किल है यार, लाइक अगर उनका ओवरऑल टीम, लाइक आई वाज डिस्कसिंग द सेम थिंग विद हर्षल यस्टरडे, लाइक कि बहुत मुश्किल से डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ के लिए जगह है, बिकॉज द लाइक उनके जो ऑलराउंडर्स है लाइक मिचेल मार्श, ग्रेन, स्टोइनिस, मैक्सवेल, चार तो लाइक दिस आर काइंड ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर्स, लाइक हमने स्टार्क और पैट कमिंस की बात ही नहीं किया, एंड देन कम्स एस्टन अगर एट नंबर 9 स्कोर 30-40 रन्स या फिर उससे भी ज्यादा थे, बट like all rounders का package if you see, I think this is the team which with a quality, you know, all rounders I would say, like कि Marcus Stoinis मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि he will be bowling with the new ball in the one day format. T20 तो भी ठीक है, but one day format में like and Stark Cummins, so like this looks sorted. So let's see like ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप कैंपेन कैसे आता है, like 5 times है जीता है, but just a normal thing for them to do well in the World Cup. So let's see like कि क्या इनकी स्टोरी है. Yeah, just sports is saying. I don't know. I don't agree much with the what just sports is saying. I think he's saying, guys, I'm really happy for Labuschagne. This guy is really underrated all rounder. All rounder तो नहीं है white ball cricket में, in my opinion. For Australia, That he averages 34.5 in 31 matches. I think this is the exact reason he's dropped. That after 30 odd innings, where the position he bats, you expect at least an average of say close to 40 or yeah. something. So I think that is the reason he's not in the squad. Strike rate, yes, that's not a doubt. And bowling average 98.4. So yeah, it itself says that he's not a bowler. So Hmm. bowling average जितना कम हो उतना better है and इनका तो 100 touch कर रहा है. So I just Yeah. feel I don't know what just sports is trying to mention, but overall, yeah, I think he's a good batter in the end. Hmm. Yeah. Uh, other than that, what else can we talk about? अभी अभी गेम चल रहा है ना इंग्लैंड और Yeah. न्यूजीलैंड. England, New Zealand. Yeah, I think we can talk about that. Before that, I think Yes. हमने पिछले स्ट्रीम में जब मैंने और रौनक ने स्ट्रीम करी थी, there was one guy who was saying that I don't remember his name, but he was on the stream saying कि हमने इंडिया पाकिस्तान का रिव्यू करा था वो टाइम पे मैच के पहले एंड हमने पाकिस्तान के ट्रियो के बारे में बात करी थी यू नो शाहीन Pace, शाह right? अफरीदी नसीम शाह एंड हारिस रऊफ एंड he Yeah. said they are not the best pace attack in the world. I think Sunil Gavaskar came out and said today that they have the most lethal new ball attack in the game. They have left Hmm. arm, right arm combinations. They can move the ball both Hmm. ways at good pace. So it's not easy for any batter to get aggressive against them for the Hmm. word from the word go. Then that Yeah. itself explains. I mean, I completely agree with each and every word said here. So Hmm. I think मेरे हिसाब से they are the best pace attack right now in Yeah. world cricket. I think they've picked up इंडिया के सामने सारे 10 विकेट पेसर्स ने लिए थे Yeah. In एंड all the three matches, they have done the same. no, I think Nepal, in the Bangladesh. last game it was like 9 wickets, but yeah, I think close to 10 odd wickets. So last against Pakistan against Bangladesh, I think it was 9 wickets. No, I guess it was 10, no? Yeah, no. Shakib I was, think in the yeah, last game I it was guess it was 10. I don't know. मैंने कहीं तो पढ़ा था, but yeah, anyways, 9, 10, whatever. Yeah. It's one and the same thing. And yeah, I think that proves our point as well. I think based on the quality of cricket these guys are playing, I'm Hmm. not surprised they are doing so well as well. So I Yeah. just feel this is the pace attack to watch out for in the World Cup because the conditions are very similar for them. I think they will be using the conditions to their Hmm. advantage. पाकिस्तान जैसे pitches इन्हें यहाँ पे भी मिलेंगी in India. So I just feel these are the bowlers which will be, Hmm. crucial for any opposition But to. you feel like कि like जितना अच्छा पेस अटैक है, I think they should be happy. But that's the thing, like जितनी बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती है, then आप आपकी जो बाकी ऑप्शंस है, because I was seeing like कि जो स्पिन अटैक है, like we expect, I think शायद पाकिस्तान फैन शायद बेटर एक्सपेक्ट करेंगे लाइक्स ऑफ शादाब खान, ऑब्वियसली बैटिंग में तो ही Yeah, डज बैट वेल, बट विद द बॉल लाइक ऐसा भी बोल सकते हैं कि पेसर्स ने मौका भी नहीं दिया शायद स्पिनर्स को विकेट लेने का, बट थोड़े लाइक ही हैज बीन नॉन इम्प्रेसिव, लाइक इवन द गेम अगेंस्ट इंडिया आई वाज सीइंग कि बहुत सारे फुल टॉस अप गेम्स, एंड सो yeah. दिस इज नॉट समथिंग वी एक्सपेक्ट लाइक I कि think बहुत अच्छा that देखा है टी20 फॉर्मेट में, बट अभी तक थोड़ा अनसर्टन लगे एज ऑफ नाउ जो एशिया कप शादाब खान या फिर द लाइक्स ऑफ मोहम्मद नवाज की तरह है. Yeah, I agree. I think that is the only phase which Pakistan could be Hmm. dominated against. वो जो मोहम्मद नवाज और शादाब खान का जो स्पेल आता है
only because they are not big turners of the ball. They could bowl nice line and lengths, but Yeah. in terms, if you're not making the use of those slow pitches and the turners, I think the spinning wickets, I think you could be in trouble. Or I think यही एक reason था. I think Fahim Ashraf played against Yeah, Bangladesh as well, if I'm Bangladesh. not wrong. Yeah. So I think Yeah. they can add a Fahim Ashraf in that pace attack. Because after those 30 overs, the 20 overs of spin could be what अगर बाकी के 30 ओवर of Naseem, Shaheen and Haris are getting them into the game or winning the Yeah. game for them. The other 20 overs of Shadab and Nawaz could lose them the game, or maybe not allow them to dominate the entire game. So I think यही एक reason था Yeah. उन्होंने फहीम अशरफ को खिलाया. उसके पहले there was Hassan Ali in between which they were using. So I think they might go for just one spinner and go with a fourth But for maybe. some reasons, I feel कि जो number 6 का जो I think I guess Salman bats ना Salman Ali I guess Yeah. he's the one and Iftikhar Ahmed obviously at 5. So I feel कि वहाँ पे if Mohammad Nawaz can fit because Mohammad Nawaz the batter I think he can be very good like कि वो एक lefty भी है because वहाँ पे थोड़ा Iftikhar Ahmed and Iftikhar I think he still will be playing all the games in Asia Cup World Cup but Yeah. instead of Salman, they may think of Nawaz, but again, their call totally like कि Salman से क्या expect कर रहे हैं like and because at the same time Mohammad Nawaz the batter भी अच्छे but totally their call. But I feel कि सोच सकते हैं Nawaz can bat well, but Nah, I don't think I rate Mohammad Nawaz as a better batsman than Salman Ali Agha because I've seen Salman Ali Agha I think he is a batting all rounder and Mohammad Nawaz is a bowling all rounder. I think that itself explains that they would yeah. want a bit of batting depth. Yes, even though Shaheen Afridi and others these bowlers can bat as well, but Yeah. Mohammad Nawaz is only coming in at number 6 or 7. वो थोड़ी short लगती है, batting depth in Maybe. my opinion. So I just feel they might go with the Salman Ali Agha in the Yeah. future as well. Just Sports is asking, guys, do you think Ben Stokes can bat at 4 like Marsh bats at number 3? I think there was a good discussion today with Sky Sports was talking about ki Harry Brook is not included yet in the 11. Okay, for the World Cup, they do not have Harry Brook in the 11. And they were talking about Ben Stokes opening the batting if Jason Roy is not fit or something like that. So I think they are eventually looking at Ben Stokes to bat at number 4 because 3 पे दो रूट है 4 पे Stokes होंगे and Josh Butler is not opening in the Yeah. ODIs, so he comes in at number 5. After that you have Moeen Ali, Livingston, वो flexibility है उनके पास, but or maybe Harry Brook at number 6 as well. So I just feel he is not going to bat anywhere below 4. 3 पे I think Joe Root Yeah. की batting करेंगे and you might also see Ben Stokes opening the innings if David Malan ka, even though he's in a good run Yeah. of form, if he's not scoring runs around the World Cup, you might see Ben Stokes opening the batting at some point as well. Yeah. That's my personal opinion. I could see England doing that based on how Yeah. they're taking the decisions at the moment. And I think Berso भी आएंगे and I think that's Yeah, where there's but Belso as Jason well. Roy I think he's part of the World Cup as well ना like the squad they have announced. Yeah, he is. Yeah, So Jason Roy maybe is playing. I don't see they will go like World Cup में खिला है तो like he's part of squad. I see him playing the games unless उनका जो form है वो deep हो जाए because लगा है I think पिछले साल में भी वो एक पैच था जहाँ पे एक सेंचुरी मारी 3-4 bad innings. So if something like that is followed, then the likes of David Malan or Ben Duckett, I'm not sure is a part of the setup. But generally, I don't see like कि You're Harry talking Brook about Ben को Stokes. नहीं yeah Ben Stokes हुए but Ben Duckett भी I guess he was part of the one day setup in some period. Yeah, but I don't think he'll be a part of the World Cup World Cup squad में तो because I नहीं है think I he guess is Ben Duckett नहीं है ना World Cup yeah, squad. I don't see him playing as well only because there's Moeen Ali, there's David Malan, there's Sam Curran. I think enough batters, and I don't But see Ben is he Duckett part of the getting squad out of. like Ben Duckett? No, he is not. I think नहीं he's the है. vice captain for the Ireland series, which is after the Ireland New series Zealand yeah series. And yeah. Jack Crawley is But the like captain. Ben Duckett is the vice captain. yeah. Bender to still like it's fine, but like Harry Brook अगर I'm thinking like कि अगर होते भी तो आप उनको कौन सी जगह पे खिलाओगे because ये I नंबर मेरे लिए want तो ही Moeen Ali bats to at play number all 6. the 10 games like at number 5, number 6, number 7 वो तो flexibility है उनके पास because in Indian conditions Moeen Ali the bowler like हमने देखा है बहुत टाइम से इंडियन कंडीशंस में ही बॉल्स रियली वेल बट जो रूट का भी ऑप्शन है देन लियम लिविंगस्टन भी बॉलिंग करते हैं आदिल रशीद भी है बट आई थिंक मोइन अली he's a proper classic off spinner so he makes his plays Ben Stokes भी है लियम लिविंगस्टन भी अब खेल ही जाते हैं then comes Butler the captain so where does Harry Brook play like even अगर For स्कॉट me, का he हिस्सा bats at होता है number 6. For me, he bats at number 6 or maybe at 5, maybe because he's pretty flexible. I think he has played in all those positions for England.
and he's a Yeah. match winner. Yeah, I think England calling back Ben Stokes, New Zealand calling back Trent Bolt. I just feel it shows that this is going to be a World Cup of match winners. एक Yeah. होता है ना कि यार हर वर्ल्ड कप में एक किसी प्लेयर का करियर चेंज होता है. I just feel this Hmm. World Cup is the last for a lot of cricketers of this generation. And उसी की वजह से I think we'll see a lot of match winners stepping up in this World Cup, क्योंकि Yeah. एक एक या दो प्लेयर या तीन प्लेयर का लास्ट वर्ल्ड कप नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स का लास्ट वर्ल्ड कप Yes. हो सकता है. I'm not talking about any random cricket. I'm just talking about these big Hmm. names जो पिछले 10 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में they have Yeah. played their part. So I think we will Hmm. see a lot of exciting cricket, a lot of pressure cricket, in Hmm. general as well in this World Cup. Yeah. Uh, और कोई comment है just saying why not Bairstow and Malan? Yeah, I think the first choice is Bairstow. Malan only because I think he has 400s in the last 14 odd innings, Wow. and Jason Roy has 200s in the last six innings for England. So it's a good problem to have, Bairstow, Malan, and Jason Roy. Hmm. But any of the two out of the three, I think it's a very good opening pair. Like David Uh, Malan, the player, like पहले तो जितना मुझे like in 2019-20 उनका पैच था, like he was one of the finest या फिर number one batter in T20s, and I think he really progressed well in the one day format. Like technique भी बहुत अच्छी है, but again in the list of underrated batters. But इंटरेस्टिंग होगा इंग्लैंड के लिए भी डिसीजन लेना. जेसन रॉय, मलान, बेरसो, लाइक टफ कॉल, बट अच्छा है. आई मीन गुड हेडेक बिफोर द वर्ल्ड कप. एंड द फर्स्ट मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड ना, yeah, अहमदाबाद स्टेडियम. Ahmedabad. Yeah, so I think Owen Morgan came out today and said that this England side is not as settled as the 2019 one, and I kind of agree to his point, because वो 2019 की इंग्लैंड 11 में हम इंग्लैंड टीम में हम 11 निकाल सकते थे वेरी इजीली. इन दिस या. टीम यू कैन नॉट सिलेक्ट हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट 11 या व्हिच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट 11. Right now या. in today's game, their bench is Sam Curran, Jason Roy, Bairstow, and Moeen Ali. Half of वाह. these guys will be playing in the games for sure. So I just feel they don't know the settled 11 yet, but getting closer to the World Cup, they might find the strongest 11 is what I feel. Yeah. Yeah. Uh, Yes. And I think if you like थोड़ा scoreboard भी बता देते, like yeah, 150 sure. for न्यूजीलैंड, like again डेवॉन कॉनवे अच्छी इनिंग्स खेली. like न्यूजीलैंड का भी, like if you see, like अभी नो आई वाज सीइंग कि ओपनिंग में मुझे थोड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है, बिकॉज विल यंग अभी ओपन कर रहे हैं. फिन एलन को बहुत टाइम से बैक किया, आई थिंक वर्ल्ड कप खेला है. मार्टिन गप्टिल की जगह, लाइक आई वुड से कि T20 वर्ल्ड कप में गप्टिल बाहर थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. सो इंटरेस्टिंग होगा कि विल यंग ओपन करेंगे, बिकॉज आई रिमेंबर हेनरी निकोल्स जो है उन्होंने भी 2019 में ओपनिंग करी थी. अभी केन विलियमसन आ जाएंगे, देन हु ओपन्स फॉर देम? विल हेनरी निकोल्स No, no, कीप no. हिज प्लेइंग इन द टीम? सो थोड़े I इश्यूज नहीं, बट थिंग्स टू बी एड्रेस फॉर द कीवीज एज वेल. No, no, I think New Zealand have already settled that their top order. I would say I think Will Young and Devon Conway will open. I think it's a given now. I think the way they have backed Will Young, I think he will play. Kane Hmm. Williamson is starting at number three. Yeah. And there is Daryl Mitchell and these guys at number four. I don't see Hmm. Henry Nichols going to the World Cup. I think he's only brought in only for this series as a just to test him out. But I don't see him going to the World Cup because it's been a long time. There is, I think, James Neesham back home. He's coming back for New Zealand. There's For the Trent World Bolt. Cup? Yeah, he's going to play the World Wow. Cup if I'm not wrong. I think he only went back home for some personal Hmm. commitments, which is not like bad, but I think some positive notes Yeah. on his family side. Then Mitchell Santner is also there, so I don't think Henry Nichols Hmm. का उनको मौका मिलने वाला है. There is Hmm. Sodi who is not playing because आज की जो 11 हम देखें, if you add Kane Williamson, Mitchell Santner, Ish Sodi and Trent Bolt to the squad, it's a completely different side, New Zealand. Yeah. So I think Henry Hmm. Nichols goes out, maybe Rachin Ravindra goes out as well. He's replaced by Mitchell Santner. Kyle Jamieson might go out because he's not having the best of Yeah. times at the moment. Trent Bolt comes in for him, and Henry Nichols goes out, and Kane Williamson comes in for him. So I think it's all in Yeah. all, it's very very settled side. There's Glenn Yeah. Phillips, there's Daryl Mitchell. They bat really deep. Tim Southey can bat at number 8. So I think New Zealand have I think settled their squad, or Hmm. pretty much their Yeah. squad for the World Cup. Yeah. यस. एंड आई थिंक इंटरेस्टिंगली ना, आज ये अभी मुझे वो क्लिक भी हुआ कि आज वीरेंद्र सहवाग ने हमने पोस्ट भी किया था कि उन्होंने अपने ड्रीम जो टॉप 5 प्लेयर्स है अपनी टीम में, ड्रीम वनडे 11 में, वहाँ पे 5 प्लेयर्स का उन्होंने निवेश किया था. रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह,
there was Glenn Phillips, I think surprisingly. Fifth name, I don't remember that David well. Maybe Warner, Ben yeah, Stokes that's थे या फिर David Warner. या बट अभी नो लाइक बाकी नाम तो हमने बहुत सुने, लाइक बहुत सारे लोगों के ड्रीम 11 में हो सकते हैं हम, या फिर टॉप 5 में हो सकते हैं, बट ग्लेन फिलिप्स लाइक ही इज अ वेरी एक्साइटिंग क्रिकेटर, बट Yeah. यार आई मीन वीरेंद्र सहवाग के टॉप 5 His बैटर्स में opinions होना is लाइक बिग थिंग फॉर हिम. his opinions are pretty much या how his batting used to be. You know, एकदम खतरनाक, एकदम तड़कता भड़कता एकदम opinion देते वीरेंद्र सहवाग. Yeah, I think adding Glenn Phillips was. I don't think he's in my top five right now, but yeah, he's a very dependable player, I would say. I या think he fields probably one of the best fielders. He can finish those innings at the at the end of the end of the innings as well. So I feel या I can see why he picked up Glenn Phillips. Maybe कोई और नाम याद नहीं आ रहा होगा, so just he had to pick someone या from the New Zealand team. So and New Zealand, we all know they all most of the times they end up going to the later stages of the World Cup. या So yeah, not surprised by him picking up. या एंड आई थिंक अभी नो एज आई वाज लाइक स्कोरबोर्ड जो दिख रहा है सामने, रन्स तो अब कम होते जा रहे हैं, बट अभी नो द वन थिंग इंग्लैंड मे लुक टू एड्रेस देयर बॉलिंग, लाइक Mhm. थोड़ी कमजोरी नहीं लग रही, लाइक रीस टोपले है, ही हैज डन वेल, बट जिस दिन इनका दिन नहीं रहेगा देन मार्कवुड 10 मैच खेलेंगे कि नहीं, सैम करन द Markwood has to बॉलर play. इन I think वनडेज लुक्स अनसर्टन. Markwood has to play all the games. I think he is that the leading fast bowler for them. और वो पेस का या बॉलर इनके पास जोफ्रा आर्चर था, अब वो नहीं है टीम में. So I just feel Markwood has to play all the games. I think उनको थोड़ा भी workload उनका manage करा जा रहा है. And I understand the workload management of Markwood because I saw the Ashes from close distance. I think या it takes a lot of effort to bowl with that action. I think he's consistently bowling 150. He's bowling long spells. When he came back from injury, he bowled 10 over spells, which is not possible at all. So I think in Mark Rutka, मेरे को समझ में आ रहा है why they are treating him differently. But yeah, in my opinion, he plays all the 10 games. या Same with Sam Curran. I think he could play ahead of David Willey, who is playing today. Then maybe a Moeen Ali or a Livingston based on the conditions or the pitches. So I think yeah, England के पास अभी थोड़ी problems है address करने के लिए, but I think closer to the World Cup they will end up या finding the best 11 like you said. या Anyways, I think this game should be New Zealand's या to win. I think from here only they have. I think England have to do something because this partnership is या going really well. इसके पहले I think Devon Will Young started really well. Adil Rashid bowled a brilliant ball to discuss him. Other या than that, Devon Conway is playing how Devon Conway plays. I think या बहुत या sensible innings, एक chance नहीं दिया है यस पूरे innings में. And yeah, Daryl या Mitchell. Then they have Tom Latham to come in. Then they have I think एक दो और भी players हैं बाकी. Then ग्लेन Glenn. फिलिप्स भी होंगे, आई गेस ही इज पार्ट ऑफ द टीम. Yeah. बट या आई थिंक ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, बट अभी नो एक जो स्टैट एक्चुअली हमने ही पोस्ट किया था, लाइक आपने ही भेजा था, आई रिमेम्बर, जो रूट का फॉर्म, लाइक Yeah. सिंपली आई वाज लुकिंग, लाइक ईएसपीएन ने भी एक पोस्ट डाला था कि इट वाज रिलेटेड टू पिछली बार खेले थे, बट देन द वन थिंग आल्सो कम्स कि यार इंग्लैंड ने उतना खिलाया भी नहीं उनको, लाइक ओवर द ईयर्स. अभी Yeah. अभी जो रहे वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, बट एक दो प्लेयर है टीम में जिनका औसत 50 के ऊपर जाता है व्हेन इट कम्स टू द वनडे फॉर्मेट. सो थोड़ा चिंतित रहेगा इंग्लिश फैंस के लिए माहौल, या फिर यू फील कि I जो रूट don't विल know. फाइंड वे टू गेट I don't think रन्स. so. I think he will come good eventually in the end. या I think India में he's always scored runs and big stage player है यार Joe Root. I think I'm not worried about England's batting at the moment. I just feel they don't have a settled top order or या like top six, top seven. I think that is their worry. But overall, I think player के form wise, I think they have enough players in form. अगर Joe या Root नहीं चले, then you have to tackle Ben Stokes, Josh Butler, Johnny Bairstow, David या Malan, Harry Brook, Moeen Ali, all these guys. So I think they have that luxury कि अगर उनका एक हाथ player नहीं चलता, I think they can still end up winning the game. या So I'm not worried about यस England much at this moment. The only team I would be worried about is India. कि हमारी 11 क्या है right now? I think I just want to focus on that. But yeah, anyways, या this game should be New Zealand's to win. 135 needed या from 120, 130 balls. I think this should be very easy. Cake walk होना चाहिए. Because pitch या में कुछ नहीं है and the pitch has become much easier to bat on compared to what England faced. So, anyways, Ankit, tomorrow prediction Sri Lanka, Bangladesh क्या लग रहा है? ओह गॉश, आई थिंक ये टफ है यार, लाइक श्रीलंका, लाइक अभी वो श्रीलंका ना, लाइक मुझे वो गुजरात टाइटन के रूप दिखते हैं उनमें, बिकॉज आई रिमेम्बर Yeah. गुजरात टाइटन का 22 जो 2022 का जो सीजन था उनका, somehow they will find a way to win a match, and I think वो फीलिंग श्रीलंका के साथ पिछले कुछ टाइम से आ रही है, लाइक इवन द एशिया कप 2022 आई रिमेम्बर कि somehow they could manage to find a way to win. अच्छी बात है, like कि tough situations में जीतना, like the game against Afghanistan was just the
demo of it. Ki they will somehow able to manage it. But for me, form favorites, like I think Sri Lanka will find a way, and I won't be surprising. कल भी कहा था मैंने ये कि they might upset one of India or Pakistan, any one of the teams, and I won't be surprised by that. So Sri Lanka favorites, Bangladesh मुश्किल है यार, like बैटिंग अब लितुन दास आ तो गए, बट मेहंदी हसन से आप ओपन क्यों करवा रहे हो? लाइक अभी तो लितुन दास आ गए, बट ऑब्वियसली देयर कॉल, बाद में क्या होगा, तमीम इकबाल भी आ जाएंगे, सो मे बी उसके बाद शॉट करेंगे. बट बांग्लादेश लाइक की एज अ यूनिट मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है एज ऑफ नाउ. सो श्रीलंका फेवरेट्स टू विन Yeah, I agree. सैटरडे. I agree completely. Each and every word I agree. I think Sri Lanka will win the game tomorrow. If they lose, then we have you can call it an upset based on how Bangladesh या has been playing. But anyways, we'll talk about it in the next game. We'll review the India versus Pakistan game maybe या after the game only because we still don't know कितना game होने वाला है on the first day itself. But अगर reserve day पे के बात तो हमें result मिल ही जाएगा because Monday looks very clean. Weather from weather's point of view. So I think हमें result तो मिल जाएगा India Pakistan game का. Then we'll talk about it. So do या join us for that stream as well. Like the video, subscribe to the channel. I think यस. Apurva is asking, is it possible Sam Curran may miss out on his place? No, I don't think so. I think he'll be in the playing 11 instead of David Willey. And even if he isn't, I think it's a pretty much a like to like replacement. Both of these guys, I think David Willey showed today as well. I think scoring 16 of the last over that he can bat. दिस इज इंटरेस्टिंग यार, लाइक इंग्लैंड में वो हर पोजीशन के लिए बैकअप्स बोल भी सकते हैं, बिकॉज देन क्रिस वोक्स भी आएंगे, वो अब कहाँ फिट या फिर होंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा. बट आई थिंक ही मे प्ले. बट इंटरेस्टिंग यार, इतने सारे बैकअप्स, लाइक वाह. True. Yeah, I think the only place is उनका जो ही नंबर 6 वाला के आसपास का स्पॉट है बिकॉज लिविंगस्टन का फॉर्म खराब चल रहा है. मोइन अली gets injured now and then there is Harry Brooks जिनको उनको खिलाना है कि नहीं उन्हें नहीं पता. So I think this is the only place. Other या. than that, they look really good in my opinion. So yep. Other than that, that is pretty much it. What we have today on the show. 40 minutes की stream कर लिया हमने. We discuss what is going on. I think as we get closer to the World Cup, we'll talk more about new things. We'll review the या. games in more depth. And for that, you just have to do one thing: follow us on all social media platforms, subscribe to the channel, like the video, follow us everywhere: Instagram, Twitter, everywhere wherever you can, and just be a part of the Third Man family. Till then, we'll see you guys in the next Yes. stream. Take care. Good night. Cheers.